मानसी दवे लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि भारतीय बाजार में तेजी के बीच कामकाज हो रहा है। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, LIC की कमजोर लिस्टिंग के बाद कंपनी के चेयरपर्सन MR कुमार से हमने खास बातचीत की। इस दौरान मिस्टर कुमार ने कहा कि जल्द ही LIC डिजिटल स्पेसेस लाने की तैयारी कर रहा है। So, Mr. Kumar, just now that you're a listed company, just today Macquarie put out a note in which they've said that this is one of the key areas market would want to see what speed at which you change your business mix going forward. So, if you could give us some aspirational business mix 3-4 years far out, 2 years far out. We would like to grow BNB to quite a. Let's talk about products. Once we start introducing the products, I've already started training the 1.37 lakh agents to sell 13.7 lakh agents to sell those kind of products. And let me tell you that LIC, as in the past, had a lot of non-par. In fact, in the 60s and 70s, we were selling only non-par. But then customer preferences changed, and Indians generally look for some return. They look for savings. So selling insurance meant that we talk about not only protection, we talk about the savings element as well. So people have bought insurance in the past more for the savings rather than for the insurance cover. Exactly. So now that is changing, and I think a lot of people are aware. The awareness has changed. A lot of youngsters believe that term is the right product to take, and we have seen a lot of uptake in our term product. So product mix going forward will change and change very fast. Very difficult to put a number on it, but maybe by June, half yearly or September, we'll be able to get a fix on where we want to be, and I'll get back. But Mr. Kumar, digitally, your peers are selling a lot of products digitally at a very aggressive rate and investing a lot in digital. What would LIC's digital plan would be so that you can catch up in a major manner, especially tier 2, tier 3 towns? Couple of things. Those who are already strong on digital, like Policy Bazaar, we already tied up with them. Internally, for the bank assurance, we are ensuring that we have a separate IT infrastructure in place to reach out to each bank who has different digital platform, so that we can talk to each of those banks digitally or electronically. And third, we plan to have our own digital space, and we have in fact bought a building at BKC where LIC digital will come up in a big way. Now that company is listed, one of the things which investors will obviously demand is the profitability bottom line. What is your top 3 things which you would want to do that the road is there for profitability? And apart from that, I also want to ask, when is the results? When is the earnings going to be disclosed for? Earnings will be disclosed for March, maybe by end of May. End of May we'll be coming out with the result. And on profitability, the 3 things that matter to us are, that we be strong on sales. We have done well in the month of April. February, March, April have been very good for us. We want to continue to grow at a rate faster than the industry. And once we grow faster than industry, irrespective of whether it is par or non-par, we are taking care of all segments. And ultimately, between par and non-par, we must also look at what the customer wants. We can't push non-par to a customer who wants par. He is used to that. Right, so it's a very balanced thing that we'll have to take going forward, and we'll try to do that. So talking about the digital thing, what do you think is the way going forward? You said that you are going to have LIC digital. Is doing it organically or more tie-ups in the future? Both. Because we are very good in IT infrastructure experts, and we've been there for many years doing IT. We do have a strong, but then we want to look at what's happening on the outside. We want to look at insurtechs. We want to look at maybe partnerships with some of them or some others who can help us to, raise the level of digital marketing that we want. सर, पॉलिसी होल्डर्स और खासकर जो रिटेल निवेशकों ने जो पैसा लगाया है LIC में, आज की लिस्टिंग के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या उम्मीदें होनी चाहिए LIC से? देखिए, जिन्होंने पैसा लगाया उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद ही मस्ट स्टे, है ना. टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट. वो लोग जानते हैं, और जो नए लोग हैं दे मे नॉट इवन नो दैट. सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर देम दैट जितना पैसे आपने लगाया है, प्लीज़ होल्ड ऑन टू द शेयर्स. तो जल्दी LIC डिजिटल लाने की योजना है, और इस पर विस्तार से जब LIC की लिस्टिंग के बाद मिस्टर कुमार से हमने बातचीत की, उन्होंने अपने कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर और साथ ही इस लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशकों को कैसे इसे देखना है, इस पर भी विस्तार से बातचीत की. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू मार्केट्स और बाजार की अगर बात
करें, दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि बाजार अच्छी तेजी के बीच काम करते हुए दिख रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत जो अच्छी होती हुई दिखी वो शुरुआत अब भी कायम है और अगर आप निफ्टी को देखेंगे यहाँ पर अच्छे लेवल्स के साथ कामकाज नजर आ रहा है और अच्छी बात यह है कि तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में भी तेजी और 16,000 के पार निफ्टी जो है वो ट्रेड करने में कामयाब हो चुका है। 34,000 के पार बैंक निफ्टी में अब भी कामकाज देखने को मिल रहा है। करीब 500 अंकों की बढ़त के साथ अब बैंक निफ्टी में ट्रेड्स देखेंगे और निफ्टी में करीब 300 अंकों की तेजी नजर आ रही है। इस बीच सेंसेक्स में 1000 अंकों की तेजी। अनुमान यही था कि LIC की अगर कमजोर लिस्टिंग होगी तो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पर एक हिट या एक डेंट आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाजार देखिए उच्चतम स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। और मिड कैप स्पेस भी एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर लाएंगे। मिड कैप्स में भी अच्छी तेजी के बीच मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार हम आपको बता रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं और यहां पर देखिए करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरे निशान के साथ ही आज हम देख रहे हैं अच्छी बढ़त पर ही कामकाज देखने